प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, तय थी वियो आहे त पंजाब ऐं KPK जूं असेंबलियूं हिन ई महीने टोड़ियूं वेंदियूं। बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान अॻूणो वज़ीर आज़म ऐं PTI जो चेयरमैन 20 डिसंबर ते कंदो। अॼु असद उमर इहा स्टेटमेंट जारी कई आहे। उन सां गॾोगॾु अॼु इमरान ख़ान पिणु इहो चयो आहे त 20 डिसंबर ते बाज़ाब्ता तौर ते असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान कयो वेंदो। काफ़ लीग जेका अहम इतिहादी आहे PTI जी, उन बाबति बि इमरान ख़ान चयो आहे त उनखे फ़ैसिले बाबति आगाह करे छॾियो। हाणे अॼु प्रोग्राम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ अगरि असेंबलियूं टोड़ियूं थी वञनि, KPK ऐं पंजाब असेंबली टोड़ी थी वञे, वाक़ई अगरि पंजाब असेंबली टोड़ी थी वञे त पोइ मुल्क में जेको पॉलिटिकली काफ़ी ॾींहंनि खां बहस पियो थिए त अदम इस्तेकाम थींदो, त या उन सां अदम इस्तेकाम वधंदो या घटि थींदो, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त न वक़्त खां अॻु में चूंडूं थींदियूं ऐं न ई वरी इमरान ख़ान सां ॻाल्हियूं थींदियूं। इमरान ख़ान मुल्क में माण्हुनि खे उकसाए रहियो आहे त उहो हुकूमत जे ख़िलाफ़ु बीहनि। इन तमामु तर सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं गॾोगॾु शाहिद खाकान अब्बासी जेको अॻूणो वज़ीर आज़म आहे, उनजी इन स्टेटमेंट ते पिणु अॼोके प्रोग्राम में बहस कबो। त जेको चए थो पियो त मुल्क में इंतिज़ामी या नवां सूबा ठाहिण जी ज़रूरत आहे। अगरि नून लीग खे इन जी ज़रूरत छो थी पवे, इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे PTI जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो मेंबर जनाब लाल माली साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं सिंध असेंबली जो मेंबर सूबाई वज़ीर जनाब नवाब तैमूर टालपुर, ऐं असांखे जॉइन कंदो गौस नियाज़ी साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान आहे, सेनेटर आहे। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। छा वाक़ई हाणे तय थी वियो आहे त पंजाब असेंबलियूं ऐं KPK असेंबलियूं टोड़ियूं वेंदियूं, या अञा बि अव्हां सम्झो था पिया त ॻाल्हियुनि जी ज़रूरत आहे, ॻाल्हियुनि ज़रिए मामला हल थी वञनि त इन जी ज़रूरत न पवंदी? असद महिरबानी। सभ खां पहिरीं त इहो ॾिसो, हिन मौजूदा वक़्त में जेके जनरल इलेक्शन्स आहिनि उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी ज़रूरत न, पाकिस्तान जी ज़रूरत आहे त फौरी तौर ते मुल्क में जनरल इलेक्शन्स थियनि। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त मौजूदा हुकूमत खे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॻाल्हियुनि जी पिणु आच कई त तव्हां इन मामले खे एजेंडा ते आणियो, छाकाणि त तव्हांजे अचण खां पोइ हिकिड़ो उहो पाकिस्तान हुयो जेको अप्रैल में हुयो, जिते अटो 50 रुपया किलो हुयो, जिते पेट्रोल 150 रुपया लीटर हुयो, जिते बिजली हुई, गैस हुई। अॼु इहो मुल्क में इहे सभु शयूं अवेलेबल न आहिनि। डार साहब आयो, चयो त डार आ रहा है और डॉलर भाग रहा है, गिर जाएगा। त डॉलर हाणे वाकई भॼी वियो आहे मुल्क मां। डॉलर अड़लब आहे। तव्हांजा कंटेनर कई सावियुनि जे तइदाद में पोर्ट ते बीठा आहिनि। उन्हनि वीचारनि खे माण्हुनि खे ॾंढ पवनि था पिया, उन जो किराया पवनि था पिया, तव्हांजा सूबा रड़ियूं पिया था कनि त असांखे पैसा कोन था मिलनि। उन्हनि खे हीअ हुकूमत पैसा ॾियण खां लाचारी ज़ाहिर करे चुकी आहे। तव्हां ॾिसो पिया त जेके तव्हांजे सॼी दुनिया में जेके तव्हांजा सिफ़ारत खाना आहिनि, उन्हनि सिफ़ारत खाननि में बि हीउ जेको आहे ॾेई कोन पिया सघनि, उन्हनि जूं पघारूं कोन था ॾेई सघनि, ऐं उते हिकिड़ो खिल जो हिकिड़ो माहौल थी वियो आहे। इन्फ्लेशन, महांगाई जेका आहे, तेल हाणे पेट्रोल जेको आहे वो अॼु जेके ख़बरूं आहिनि उहो $78 वधियो आहे, तॾहिं बि $78 पर बैरल आहे। असांजे दौर में 115 रुपया पर बैरल हुयो, पर 150 रुपया फी लीटर हुयो। त हीउ मुल्क जेको आहे ही तमामु तेज़ी सां दीवालियो थियण वञे थो पियो। इन जो मुल्क जे दीवालियो थियण कोई मज़ाक न आहे। हिकिड़ी एटमी जेको कुवत आहे, इन जी हिकिड़ी पाकिस्तान जी हिकिड़ी बरजस्ता ऐं ताक़तवर फ़ौज आहे, कि पाकिस्तान जे इदारनि खे नुक़सानु थींदो, पाकिस्तान जी आवाम खे नुक़सानु थींदो। हिननि जी तरजीह जेका आहे, मां हिकिड़ी ॻाल्हि करणु चाहियां, हिन जी टोटल तरजीह हिकिड़ी आहे त इमरान ख़ान तोशाखाना घड़ी छो वरिती कानूनी तौर ते ऐं छो विकिणी। इन खां अलावा हिननि वटि सुबुह ऐं शाम इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि था। इन खां अलावा हिननि वटि ॻाल्हाइण लाइ का शइ आहे ई कान। असेंबली टोड़ण जी जेसिताईं ॻाल्हि आहे, उहो असांखे आइन हक़ ॾिए थो। हीअ आइन जे आइन जी ही ॻाल्हि कनि था, उन तहत असीं इहो फ़ैसिलो करणु वञूं था। हीअ यकीनी तौर ते सम्झनि था त असां इतादी असां सां गॾु न बीहंदा, उहो असांजो मामिलो आहे। हीअ बहितर आहे त पाकिस्तान जी मुआशियत खे ठीक करण में पंहिंजो किरदारु अदा कनि। ओके, गौस नियाज़ी साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है सर? अच्छा नियाज़ी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना लाल माली साहब का। वो कह रहे हैं कि मैशत जो है वो अब तबाही के किनारे पे है, हुक्मरान जो है वो होश के नाखून नहीं ले रहे, और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए। अच्छा जी, देखें, उन्होंने कहा जी इलेक्शन से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। जरा मैं इनसे पूछता हूँ, ठीक है जी, अगर ये इलेक्शन में हार जाते हैं तो क्या अपनी हार तस्लीम करेंगे? जी नहीं करेंगे। बिल्कुल ये एक ड्रामा लगाया हुआ उन्होंने। बस एक ही है, उनको कुछ मुल्क की फिक्र नहीं है कि मुल्क डिफाल्ट कर रहा है, ये कर रहा है। उनको फिक्र है कि इलेक्शन हो जाए तो इस वक्त हमारी मकबूलियत ज्यादा है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और कोई नहीं है। मुल्क जो है बाढ़ में, कोई मुल्क की फिक्र नहीं है।
اور ان کے دنوں میں جب جن کا اقتدار واپس لیا گیا جی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے جو سیاسی پنڈت تھے یا دوسرے ہمارے جو اکانومی پہ نظر رکھنے والے تھے کہ جی اکانومی سے سنبھل نہیں پا رہی جی اور اتنا کچھ وہ گیپ آ چکا تھا کہ شاید نہ لیا جاتا جی تو پھر شاید ہمارا ملک دفاع کے قریب چلا جاتا. جی تو الحمدللہ اب تک ہمارے یہ روزانہ خان صاحب رٹ لگاتے ہیں کہ ہم 100% دفاع کرنے جا رہے ہیں جی اور ملک دفاع کے قریب جا رہا ہے. حالانکہ پچھلے ہفتے بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کرنے کا چانس صرف 10% ہے جی اور کل خان صاحب کہہ رہے تھے یہ 100% ہے. تو یہ ان کو بس اقتدار کی وہ مزے اور وہ ہیلی کاپٹر اور سارے یاد آتے ہیں جب انہوں نے یاشیں کی اور ملک کے وسائل کو لوٹا. جی وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ الیکشن کرا کے جیت جائیں اور پھر آ جائیں. ایسی ہونے والا نہیں ہے. تو صاحب آپ کو اس بات کی شورٹی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ معیشت پہ آپ کا کنٹرول ہو چکا ہے؟ بالکل انشاءاللہ. دیکھو یہ پچھلے ہفتے ہم نے سکوپ بانک کے 1 ارب ڈالر کی کیس ادا کی ہے. باقی 2-3 ارب اگلے 2 مہینے کرنے وہ بھی اس کا بندوبست کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط تھی وہ بھی ہم نے پوری کر لی ہے. ہم پر امید ہیں، ہمیں امیدیں ہیں کہ دیکھو اللہ کرے ملک ڈیفالٹ نہ کرے. یہ بھی جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے بھی کل 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرا. تو وہ تو ان کا پی ٹی آئی والوں کہا کہ وہ کہہ رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے. چلیں وہ تو ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا نیاز صاحب، پہلے خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بات چیت نہیں ہوگی، میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا، میں باقیوں سے تو بات چیت ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اب شہباز شریف وہی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہی لینگویج ہے کہ خان صاحب سے بات نہیں ہوگی. جب سیاسی لوگ اس طرح سے بات چیت نہیں کریں گے تو پھر مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھو جی، ہم جب کہتے تھے کہ بات کرے تو وہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. جی کہتے کہ نہیں جی میں پوزیشن کے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا کہ پوزیشن جی کرپشن ہے، کب ہے، یہ وہ ہے. جی لیکن اب جب اپنی کرپشن سامنے آئی ہے اور خان صاحب کو فیل ہونے لگا کہ میرے خلاف شکنجہ یا کرپشن کی جو سٹوریاں آ رہی ہیں تو کہیں میرا حال بھی وہی نہ ہو جو میں نے اپوزیشن کا کیا تھا، تو وہ اس ڈر کے مارے ہمارے سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اچھا. اور دیکھو مذاکرات تو ہم جو صدر علوی کے تھرو مذاکرات تو چل رہے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی کرائیں، تو ہمارا وہ ہم نے الیکشن جلدی نہ کرانے کی جو سیریس وجوہات ہیں ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ معاشی ہمارا حالات ہیں جو باہر ملک سے ہمارے کوئی اگریمنٹ کر رہے ہیں، اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے 3-4 مہینے پھر گیپ آ جائے گا. اچھا نیاز صاحب، نیاز صاحب آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے اور آپ نام بھی لے رہے ہیں صدر کا، تو اس میں کیا فقط الیکشنز پہ بات ہو رہی ہے یا کیسز پہ بھی بات ہو رہی ہے؟ خان صاحب کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، توشہ خانہ کا کیسز ہے، فارن فنڈنگ کا کیسز ہے، اب دیگر کیسز بھی کھل رہے ہیں، ان پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ 2 چیزوں پہ میرے خیال بات ہو رہی ہے. ایک معیشت پہ بات ہو رہی ہے اور ایک الیکشن کی ڈیٹ پہ. کیسز پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ کیسز کے حوالے سے جی ہمارا شروع سے یہ اسٹانس رہا ہے. دیکھو جس طرح پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف کیس بنایا ہے، جی اگر ہم اس طرح شروع ہو جاتے اقتدار میں آنے کے بعد، جی تو میرا مطلب ہے یہ تو ان کی پوری ٹیم جو ہے اور یہ سارے پی ٹی آئی والے جی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اچھا. ہم نے تو اپنے ملک کو معیشت پہ توجہ دے رہے ہیں اور کہا کہ ملک کی معیشت کو آگے جائیں. باقی قانون ہے، ادارے ہیں، قانون خود اپنا راستہ بنائے گا جی اور قانون خود راستہ لے کے شکنجے کو سخت کرے. ٹھیک ہے. ہم یہ کوئی اتقابی بندے نہیں ہیں، یہ خود اپنے آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرے وہ کریں. ہاں اوکے. لال واجد صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی سنا نیازی صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا شورٹی ہے کہ اگر جلدی انتخابات کرائے جائیں تو معاملات حل ہو جائیں گے، مسائل ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ کیا شورٹی ہے کہ اگر الیکشن میں رزلٹ ان کے خلاف آ جائے گے تو کیا یہ اپنی شکست تسلیم کریں گے؟ اسد مجھ سے سوال پوچھا ہے؟ جی لال صاحب. اچھا دیکھیں، غوث نیازی صاحب بہت قابل احترام اور بہت سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ الیکشن سے مسائل کیسے حل ہوں گے. دیکھیں اس وقت الیکشن سے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سمجھتی ہے، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے ایک سازش کے ذریعے، ایک سازش کے تحت وجود میں آئی، اور اس کا اب برملا اظہار جو مختلف جگہوں سے ہونے لگا ہے. پہلے میں اس ڈیٹیل سب نہیں جا رہا، کافی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دیکھیں پوری دنیا اور پاکستان کے عوام، انویسٹر سب یہ دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے یا نہیں, یا پاکستان میں اس وقت حکمران ہے, پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. یہ 14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کو, آپ نے کل بھی اسمبلی میں دیکھا, یہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور شدید اختلافات رکھتے ہیں. اب ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں. آج جو رپورٹس آ رہی ہیں بلاول بھٹو صاحب کی, جو دورے ہوئے 7 ماہ میں یا 8 ماہ میں, اس پہ خرچہ جو ہے 1.70 ارب روپے خرچہ ان پر آ چکا ہے. اور جو اب یہ کہتے ہیں تو یہ ہے, یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے زہر نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا ایک ہفتہ یا 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک اور لاٹ لی ہے وزراء کی, اور پاکستان کی عوام کے اس پہ یہ خرچہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اب ان کے آنے کے بعد دیکھیں ان پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہماری حکومت گئی تو عوام نے ان کے خلاف احتجاج کیا, ان کو پنجاب بائی الیکشنز میں رد کیا, ان کو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں رد کیا. خان صاحب کھڑے ہوئے, 8 میں سے 7 جو ہے سیٹس انہوں نے جیتی. کشمیر میں ان کو بدترین شکست ہوئی ہے. تو پاکستان کی عوام, ان کو جب عوام رد کر دے تو ان کو اس سے چپکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کسی قسم کا نقصان ہو. پاکستان کے استحکام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو. اس کے لیے خان صاحب نے بات چیت کے لیے آفر کی. اب یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ تو اب تو ایکسپوز ہو گئے نا. صرف خان نے ایک جملہ کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, تو تھیلی بلے سے باہر آ گئی, اور پرائم منسٹر خود آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں بات چیت کریں گے تو ہمیں الیکشنز میں جانا پڑے گا, قبل وقت الیکشنز میں جانا پڑے گا. اور ہم الیکشن میں گئے تو ہم نے, آج آپ اندازہ لگائیں سپریم کورٹ نے آج کیا کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو لیجسلیٹرز, جس امینڈمنٹس نے جو یہ لے کے آئے تھے نیب کے قانون میں, انہوں نے کہا ہے کہ ان نیب کی ترامیم کا فائدہ صرف اور صرف قانون سازوں کو ہوا ہے, لیجسلیٹرز کو ہوا ہے, ایم این ایز کو ہوا ہے, سیاستدانوں کو ہوا ہے, سینیٹرز کو ہوا ہے. تو یہ پی ڈی ایم جو مقصد لے کے آئی تھی تو وہ یہی تھی کہ ان کو خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں وہ سلیمان شہباز کیسے ملک میں آ گئے ہیں, اسحاق ڈار کیسے آ گئے ہیں, نہ کوئی ان سے کورٹ پوچھ رہی ہے کہ بھائی 4 سال کورٹ آپ کا انتظار کر رہی تھی, آپ آ رہے ہیں اور بڑے مزے سے آپ ضمانتیں لے کے جا رہے ہیں. ابھی ایک میں اور چیز آپ کو بتاؤں, یہ نیب جو کورٹ نے, ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نیب کا جو کیس میں سزا ہوئی تھی, نیب پہ لازم ہے کہ وہ اس کو جو بریت کو چیلنج کرے, لیکن نیب نے فیصلہ کیا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہے, کہ وہ اس کو بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے سب اداروں کو یہ اپنے ماتحت کر لیا ہے, اور یہ سوائے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کو پاکستان کی عوام سے کوئی محبت نہیں ہے. اس کی بھوک سے, بیماری سے, مہنگائی سے جان نکل جا رہی ہے. اور یہ صبح سے شام جو بھی وزیر آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ عمران خان گھڑی لے گیا, اور بھائی پیسے دے کے لے گیا. پاکستان کو 70 سالوں میں جو تحفے ملے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ایک گھڑی کو چھوڑے وہ تحفے نکال لے. ہر تحفہ جو آتا ہے وہ آکشن ہوتا ہے اور مارکیٹ میں جاتا ہے. نواب تیمور ٹالپور صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. مجھے آواز آتے اچے پہ عوام کے بدھو پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نواب صاحب یہ بتائے, جو تک شاہد خاقان عباسی بنی اگ میں کراچی میں ایڈیٹرز کے خطاب کرتے چاہیے ہے تو ملک میں نواں انتظامیہ نواں صوبہ ٹھائن کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی جو اسٹینڈ کہڑو ہے نون صوبن بابت, اساں ڈٹھو سی تو قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی بھی ٹھئی ہے تو وہ نون صوبن میں کو آئینی ترمیم بابت سفارشوں ڈیندی. پیپلز پارٹی چاہے چھا تھی, سندھ حکومت چھا تھی چاہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس تائیں سندھ جی ॻाल्हि का अचे थी नए सूबे जी, त मां सम्झां थो को बि अहिड़ो फ़ैसिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नथी करे सघे जंहिंमें सिंध जी अवाम जी राय न हुजे. राय अक्सर जेको आहे सिंध सूबे जी इहा ई चाहे थी त हिकु सूबो आहे, हिकु सूबो ई रहे. ऐं उन जे अॻियां तसुल में हलंदे जेका तव्हां ॻाल्हि कई साईं ख़ुर्शीद शाह साहिब जी रहनुमाई में कमेटी ठही आहे जेके सॼे पाकिस्तान जे केस जी जाइज़ा वठंदी. जे किथे कंहिं सूबे में यूनानिमसली सभु एग्री कनि था त हुते का चेंज थियणु खपे, हुते को नयो सूबो ठहणु खपे, उते जी लोकल डिमांड आहे त बिल्कुलु उन में मुशरफ कई वेंदी. जे राय ईअं आहे त बिल्कुलु कयो वेंदो, पर इहा हर शइ जेको आहे स्क्रूटनाइज़ थींदी, स्क्रूटनाइज़ थियण खां पोइ फ़ैसिला थींदा. त सम्झो पिया त हीअ हिकु कमेटी ठही आहे क़ौमी असेंबली में, उहा ॿियनि सूबनि लाइ, सिंध लाइ कोन्हे इहा? सिंध में हिकिड़ी अहिड़ी जमात आहे या अहिड़ी हिकु ॿ जमातूं आहिनि जेके चाहिनि थियूं त सिंध में 2 सूबा ठहनि. कराची खे अलॻि करण जो सोचनि था,
तो हो पंहिंजी राय ॾेई सघनि था, पर जेका राय अक्सरत आहे उहा सिंपल कहिड़ियूं ॿ जमातूं आहिनि नवाब साहब, कहिड़ियूं ॿ जमातूं आहिनि वाज़े तौर ते? MQM खां असां ॿुधंदासीं, जी तव्हां बि ॿुधंदा हूंदा, त उन्हनि जी इहा डिमांड हूंदी जेके हमेशह पाकिस्तान पीपल्स हाणे पार्टी ॿी कहिड़ी जमात है? ॿियूं जी 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 ॿी कहिड़ी जमात है? ॿियूं नंढियूं मां सम्झां थो टांगा पार्टीज़ आहिनि जिन्हनि जो ज़िक्र करण को ज़रूरी न आहे, अहिड़ो मैटर नथियूं कनि। अच्छा, पर हाणे त MQM तव्हांजी इतिहादी आहे, अहम इतिहादी आहे, हाणे मां सिंध हुकूमत में बि उनखे शेयर पिया ॾियो, कराची जो मेयर, कराची जो एडमिनिस्ट्रेटिव तव्हां उनजे हवाले करे छॾियो आहे। तव्हां नथा सम्झो त इहे जेके शयूं आहिनि इहे सिंधी माण्हुनि खे पसंदि कोन थींदियूं? सिंधी माण्हू मां थोरो वाज़े कंदो हलां जी त सिंध हुकूमत में को शेयर MQM खे न मिलियो आहे। MQM असांजी वफ़ाक़ में असांजी साथी आहे ऐं सिंध सूबे में असां हुननि खे को बि शेयर या वज़ारत के बि शइ में एडजस्ट न कयो आहे। हाँ, जे तव्हां ॻाल्हि कयो था एडमिनिस्ट्रेटिव कराची जी, त बिल्कुलु असां MQM खां 2-3 नाला वरिता, असां पंहिंजा बि नाला रखिया ऐं इहो जेको एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव थियो आहे, अपॉइंट थियो आहे, इहो एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत अपॉइंट कयो आहे। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी कि असांजी राय ऑफिसर लाइ सुठी ही असां सम्झूं था बहितर कमु कयूं, इन करे सां MQM जो भी इनमें नाराज़ हो तो असां बिल्कुल उनके एडमिनिस्ट्रेटर किया हुआ। ठीक है। न्याजी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना लाल माली साहब को, उसके बाद नवाब तैमूर टालपुर साहब को। अब ये बताइए कि नून लीग क्यों समझ रही है कि मुल्क में नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? देखिए जी, ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने उनका एक व्यू है जी। वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी सूबे बने या ना बने या जो भी हो, वो इत्तेफाक की राय से होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त जो है जिन हालात में गिरा है, इस वक्त हमें इत्तेफाक की राय की जरूरत है। हाँ, तमाम अगर इस पे सूबे राजी हो जाते हैं तो फिर वो बनाया जाए, इससे लोगों की मुश्किलात कम होगी, गवर्नेंस में जो है वो आसानी पैदा होगी। और एक तसर बन गया है कि जी फलां सिंधी है, फलां बलोची है, फलां ये एक दूसरे के जी पंजाब वाले ये कर गए, बलोचिस्तान वाले ये कर गए, तो इस तसर को खत्म करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो इसी में शायद खाकान इसी तरफ जो है वो अपना जो है वो लेकिन न्याजी साहब, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है? और फिर जो कमेटी बनी है कौमी असेंबली की, वो भी अगर इस तरह की कमेटियां बनेंगी तो फिर लोगों में इंतशार फैलेगा। पहले ही मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और फिर अगर ये मसाइल उठेंगे तो और मसाइल होंगे, मसाइल का हल नहीं निकलेगा इस तरह। नहीं, वो तो पहले कहा है कि जी हम कोई ज़बरदस्ती बलडोज तो नहीं करना है ना, उसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी होगी और उसको जब अगर वो बेहतर समझेंगे तो सूबे बनाएंगे, एक बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, तो वो सारी जो है ना वो सियासी पार्टियां जो हैं वो मिल के बैठेंगी। इसमें कोई इंतशार की गुंजाइश नहीं होगी। अगर इत्तेफाक की राय से फैसला होगा, इत्तेफाक की राय से हमने 18 तरमीम मंजूर की थी, वो तो हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम था। न्याजी साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि आपकी जो इत्तेहादी है MQM, उसका प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि आपने हुकूमत से पहले जो उनसे मुआहदा किया था उसमें ये बात वाज़ेह थी कि आप इंतज़ामी तौर पे इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे और वो सिंध में भी बनाएंगे आप। देखिए, इंतजामी यूनिट तो हमने पंजाब में बनाया, अपना तो चल रहा है। जनूबी पंजाब का अलग एक सेक्रेटरीट है, वहाँ सारे मामला। मसला ये है कि जो दूर से लोग आते हैं और वो ज़ाहिर जो नईम यार खान है या सादिकाबाद है, वो लाहौर से जो है तकरीबन कुछ 600-700 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए हमने मुल्तान में एक बना दिया, सेक्रेटरीट बना दिया है। तो इंतजामी यूनिट तो ये बन गया, इससे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है उस पर, अगर कम्युनिकेशन। तो सिंध में भी आप समझते हैं कि होने चाहिए? सिंध वाले तो वो हम सारे सिंध की नुमाइंदगी उसमें है, अगर वो समझे कि जरूरी है तो जरूर बनेंगे। मैंने कहा कि अगर बनाना होता तो हम ऑर्डिनेंस ले आते, सब कुछ करते, हमने नहीं किया। हमने कहा जी सारे मिलके बैठे कि अगर MQM चाहती है कि हमें सूबा मिले तो उसके लिए MQM बाकी जो उनकी मेन जो सियासी पार्टी हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कन्विंस करे, उसके बाद ये फैसला हो। तो मैंने तो पहले ये बात कही कि हमें पहले जो है हमें अपना वो एक टेबल पर बैठ के एक मुश्तरका अमल बनाना होगा जिस पे सबका कंसेंसस हो, ठीक है ना? ठीक। तो उस पे कंसेंसस होगा तो बन जाएगा इंतजामी, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, हम किसी को बुलडोज करने वाले नहीं है। ठीक है। लाल माली साहब, अब आपने बड़ा तफसीली सुना, गौस न्याजी साहब को भी, नवाब तैमूर टालपुर साहब को भी। वो कह रहे हैं कि जो नए सूबों की बात है, वो अगर वहाँ के लोग और इंतजामी यूनिट्स के हवाले से भी अगर वो वहाँ के लोग
इस बात पे मुत्तफिक होंगे तो आगे बात बढ़ेगी, वरना ऐसे नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जब तक सिंध के लोग मुत्तहद हैं, सिंध से मोहब्बत करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है जी कि सिंध में सिंध की वादत पे कोई वार हो सके, सिंध को तोड़ा जा सके, सिंध में कोई नया सूबा बनाया जा सके। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात आती है, पीडीएम की आती है, तो आपने देखा है कि वो इक़्तिदार के लिए वो सौदेबाजी करते हैं और माजी में वो करते रहे हैं। अच्छा आपने देखा कैसे लोकल गवर्नमेंट का जो ड्यूअल सिस्टम आया था, जिसको हमने कहा था बिटो निज़ाम, जी वो आया था और रूरल सिंध के लिए अलग और अर्बन सिंध के लिए अलग आया था, तो उस पर पूरी सिंध ने एहतजाज किया था उस पर। उसके बाद आपने देखा जब ये मुआहिदा हुआ, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो एमक्यूएम की डिमांड थी नए सूबे की, तो बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में, आई रिपीटेड, जी बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में अपना पीएमएल-एन और एमक्यूएम ने एक मुआहिदा साइन किया, जिसमें यह था कि नए यूनिट्स बनाए जाएंगे और एमक्यूएम को उसमें एतमाद में लिया जाएगा। जी अब आ जाते हैं इस कमेटी पे। देखिए, कमेटी अलग किसी और सूबे में बनाना चाहती थी सूबे, क्योंकि स्पीकर ने ये कमेटी बनाई है, स्पीकर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनमें अक्सरियत जो है मेंबरान की, क्योंकि टोटल 7 मेंबरान है, उसमें से अक्सरियत जो है सिंध से रख ली है। पंजाब में अगर सूबा बनाना है तो पंजाब से सिर्फ एक मेंबर लिया हुआ है, वो भी माइनॉरिटी का है, जीवा साहब, उनको लिया हुआ है, तो उससे एक शकूक व शबाद जन्म लेते हैं। लेकिन उससे हटकर आप आज फिर वो आपने खुद ही जिक्र कर दिया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो बयान आया है, तो इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब एक पेज पे है, इस पे वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और कल जो कुछ असेंबली में हुआ है, कौमी असेंबली में, सबसे पहले तो मैं उस पे भी जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि देखिए 18वीं तरमीम सिर्फ एक वजह से सिंध के लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे कि रिसोर्सेज जो है जी उसमें सूबों का हक तस्लीम कर लिया गया था। लेकिन सूबे सिंध ने और सूबे बलोचिस्तान ने 18वीं तरमीम के खात्मे का आगाज कर दिया है और उनका जो हक है वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है बाय रेजोल्यूशन। हक लाल मारी साहब इहो मां कीअं इल्ज़ाम पिया लॻायो तो सूबे सिंध सूबो जेको आहे जंहिंमें पीपल्स पार्टी जी हुकूमत 18वीं तरमीम खे रोल बैक करण जी शुरुआत कई है उन्हनि। अच्छा, असद उनमें मुझे चवण जो मक़सद इहो आहे त सिंध असेंबली हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन पास कई, जंहिंमें उन्हें चयो त पाकिस्तान जी जेका पार्लियामेंट आहे उहो मिनरल्स जे बारे में या मादनियात जे बारे में कानून साज़ी करे सघे थी। अहिड़ी क़िस्म जी कानून पंहिंजो रेज़ोल्यूशन बलूचिस्तान असेंबली पास कई। ऐं कल जेको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बिल जेको पास कयो आहे, तव्हां ॾिठो रज़ा रब्बानी उन ते वोट ॾिनो आहे, हुन चयो आहे त इहो 18वीं तरमीम जे रूह जे ख़िलाफ़ आहे। JUI जहिड़ी जमायत बि उन जी मुखालफ़त कई आहे। हाणे उन तरमीम तहत जेको रिकॉर्डिंग जो जेको जी जी आहे जी खाड़, वो उन ते सेंटर जेको आहे उहो कंप्लीट इख्तियारात हासिल करे वियो आहे। इहो मुई न, इहो त हिन जे इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी अख्तर मेंगल बि कल चयो आहे त 18वीं तरमीम रोल बैक करण जो आगाज़ थी चुको आहे। ऐं ईअं ई इहे ख़दशात वधनि था त हीअ जेको इम्पोर्टेड हुकूमत आहे, जेको हिकु साज़िश तहत आयल आहे, इहो हिकिड़ी बैनुल अक़वामी लोकली जेको अहिड़ो पाकिस्तान ऐं सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िश है, उन में ही सब शामिल है। नवाब साहब हाणे अवां तफ़सीली तौर ते ॿुधो लाल मारी साहब खे, उहो त उन इल्ज़ाम हयो आहे त मिसाल त पीपल्स पार्टी जो ॾाढो शानदार कमु आहे 18वीं तरमीम, ऐं पीपल्स पार्टी उनखे जेको आहे उहो चवंदी बि रही आहे ऐं उनजो क्रेडिट बि वठंदी रही आहे। हाणे पीपल्स पार्टी ख़ुदि 18वीं तरमीम ते रोल बैक करणु शुरू कयो आहे। असल तव्हांखे थोरो ज़हन में रखणु खपे जी सर, हींअर तव्हां हिकु अहिड़ी सियासी जमात जे वर्कर सां ॻाल्हायो पिया जी, जंहिंजे लीडर साढा 3 साल में रुगो कूड़ ॻाल्हायो आहे, इंतशार फैलायो आहे, चोरी कई आहे, धड़ियूं विकियूं आहिनि, करप्शन कई जी, उनजी जेको फर्स्ट लेडी हुई उन जा ऑडियो लीक था ॿुधिया हूंदा, डिमांड पिया कनि त इन ॾाढो हीरो खपे, इन में कमु न थींदो फिंकी पिणी जो। सो अहिड़े माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि में अचणु मुंहिंजे ख़ासि आवाम ते छॾे ॾिनो आहे ऐं असांखे डिस्कस न करणु खपे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमात आहे जे 18वीं तरमीम आंदी, आसिफ अली साहब उहो लीडर आहे जंहिं पंहिंजा पावर जेको आहे प्राइम मिनिस्टर खे ॾेई छॾिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। ऐं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं बि कंहिं बि सूरत 18वीं तरमीम वापसि न वठणु ॾींदी, न रोल बैक थींदी। ऐं इहो ॻाल्हाइण माण्हू मां सम्झंदो आहियां खिलंदा हूंदा, ॻाल्हियूं कहिड़ी था कनि। 18वीं तरमीम अहिड़ो हीरो सिंध खे ॾिनो आहे जो कॾहिं बि कंहिंखे बि खसणु कोन ईंदासीं। बाक़ी हा, जे नमूने अमेरिका जा कूड़ा किसा करे इमरान नियाज़ी छॾी वियो, जे नमूने इमरान नियाज़ी साइफर जे बारे में ॻाल्हि की कुझु साइफर अहिड़ो ख़तरनाक कोन हो, जंहिं असांजे इदारनि खे बदनाम, जंहिं हिन मुल्क सां दुश्मनी कई, जे IMF जो
लोन जेको आहे रोल बैक करण जी पूरी कोशिशि कई त पूरी जमात खां तव्हां सवाइ इंतशार जी कुझु बि कोन था ख़ारिज करे सघो। तव्हां चओ पिया त अरिड़हीं तरमीम ते कंहिं बि क़िस्म जो को रोल बैक न थींदो ऐं सूबनि जा जेके राइट्स आहिनि उहे अञा ताईं त सही नमूने सां अरिड़हीं तरमीम अमली शक्ल में आई कोन्हे, उन लाइ वधीक जदोजहद कबी, उन खां विथड्रॉ न कबो कंहिं बि सूरत में। बिल्कुलु बिल्कुलु नॉट एट ऑल। असां अरिड़हीं तरमीम खे अञा वधीक मज़बूत कंदासूं, असां अरिड़हीं तरमीम खे वधीक अफेक्टिव कंदासीं इंशाअल्लाह ताला। ऐं हे अवाम हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे वोट ॾींदी रही आहे। ऐं तव्हां ॾिसंदा मथी इलेक्शन क्लीन स्वीप जेके 2-4 सीटूं हिननि खे मिलियूं आहिनि इहे बहाने रोल बैक थींदियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मथी नवाब साहब अवां ते वरी दावा पिया कयो त मथी क्लीन स्वीप छा सिंध में या सिंध में, पंजाब में, KPK में तव्हां वॾी फतह ॾिसंदा। ऐं इंशाअल्लाह ताला जेके बि पाकिस्तान पसंदि जमायतूं आहिनि, जेके पाकिस्तान जी बेइज़ती चाहिनि थियूं, अॼु उहे सभु जमातूं गॾु वेठी आहिनि हिकु अहिड़ी जमात जे ख़िलाफ़ जेको ज्यूस जी लॉबी सम्झी वञे थी, जेको इंडिया जी लॉबी सम्झी थी, जेके रॉ जा एजेंट सम्झनि। पर नवाब साहब असां ॾिठोसीं त बाई इलेक्शन में त इमरान ख़ान अवां सभिनी खे मात ॾेई छॾी, जितां बीहो पियो उतां खटे पियो, कराची मां खटे वियो, जितां चित्राल जिते बीहे पियो खटे पियो वञे, वॾी लीड ते पियो खटे, पोइ अवां क्लीन स्वीप कीअं कंदव? ईअं कंदासीं छो त तव्हांखे ज़हन में असद इहो रखणु खपे जी सर त असां जेके सीटूं खटियूं आहिनि हींअर, जी सर, असां मुल्तान मां बि सीट वरिती इमरान न्याज़ी खां, ऐं असांजे हिकिड़े ज़िले कराची मां इमरान ख़ान खे हाराए हुन खां सीट वरिती आहे। जी हे इमरान ख़ान जूं सीटूं हुयूं जेके असां हुन खां पूरी हिकु जनरल इलेक्शन जूं सीटूं न हुयूं। हे इमरान ख़ान जी पॉपुलैरिटी में वाध आई आहे, हुनजी पॉपुलैरिटी जेको अञा घटि थी आहे, हुनजी खटियल सीटूं असां इमरान न्याज़ी खे खटाए पाण खटियूं। ओके लाल माली साहब, नवाब साहब त चए पियो त हाणे क्लीन स्वीप थींदो ऐं जेके हालतूं आहिनि उहे सभु मुल्क जूं सभु पार्टियूं हिकु पासे आहिनि, मुल्क दोस्त पार्टियूं हिकु पासे आहिनि, अव्हां जी वाहिद पार्टी जेका आहे उहा हाणे हिकु पासे। सर ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जे क्लीन स्वीप करे सघनि था त मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान खे न पीपल्स पार्टी खे मुतालबो फौरी तौर ते इलेक्शन जो करणु घुरिजे। जेकॾहिं फौरी तौर ते इलेक्शन थिया त पोइ शायदि शहबाज शरीफ़ जा जेके आहिनि बिलावल भुट्टो साहिब खे बैग न करणो पए ऐं शहबाज शरीफ़ खे बिलावल जो बैग करणो पइजी वञे, जेको हिकिड़ो ताम तासुर हो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो ख्वाबु हो उहो शायदि पूरो थी वञे। पर ॾिसो हींअर हिन वक़्तु पाकिस्तान में चइनी सूबनि में अगरि को पार्टी आहे त उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे। हीअ सभु इलाक़ाई पार्टियूं आहिनि ऐं इलाक़ाई पार्टियूं सुकंदियूं वञनि थियूं पियूं। पीपल्स पार्टी जो को KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में मूंखे को रोल नज़र नथो अचे। असद मां हिकिड़ी ॻाल्हि जेको ॾाढी इम्पोर्टेंट आहे, ॾिसो मूं जेका अरिड़हीं तरमीम रोल बैक थियण जी ॻाल्हि कई इहो ऐं पाण नथो चवां, इहो कल्ह पार्लियामेंट में असीं त आहियूं कोन, उते त मुखालिफ़ धुर आहे कान, रुॻो हुकूमत आहे, उते बाइकाट थिया आहिनि, उते रज़ा रबानी साहब उनजो बाइकाट कयो आहे, उनखे वोट कोन ॾिनो आहे। उन इहो चयो अथसि त इहो उन अरिड़हीं तरमीम जे रूह जे ख़िलाफ़ आहे, JUI चयो आहे। ऐं सूबनि जा रिसोर्सिस हवाले करण जो जेको पार्लियामेंट खे या सेंटर खे जेका रेज़ोल्यूशन पास कई आहे उहो सिंध असेंबली कई आहे। इहा रुॻो अख़बारी ॻाल्हि या जेका आहे को इहा मामूली ॻाल्हि न आहे, इहो तमामु अहमियत जहिड़ी ॻाल्हि आहे। रुॻो दावा त थी सघे थी पर इहो मामला सिंध तरफ़ वञनि था पिया। बाक़ी असांजो चैलेंज आहे जेकॾहिं जेकॾहिं इहे कॉन्फिडेंट आहिनि 14 पार्टियूं, ऐं हींअर बि असां 14 पार्टियुनि खे सिर्फ़ु इमरान ख़ान हारायो आहे। ईंदड़ चूंडनि में इंशाअल्लाह इन्हनि 14 पार्टियुनि खे हिकिड़ो अकेलो इमरान ख़ान हाराईंदो। ऐं इलेक्शन हाणे घणियूं परे न आहिनि, जेको इमरान ख़ान फ़ैसिलो करे चुको आहे। इंशाअल्लाह ईंदड़ महीने में, ईंदड़ ॾींहंनि में असीं क्विट कंदासीं, असीं डिज़ोल्व कंदासीं ॿी क़ौमी असेंबली जो पंहिंजो सूबाई असेंबली जूं सीटूं। ऐं जेकॾहिं क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि खे बि जेकॾहिं वञिणो पियो असेंबली त वापसि वञी ऐं असेंबली में बीह बि उनजी इस्तीफ़ा जो ऐलान कंदा। नवाब साहब हाणे PTI ऐं इमरान ख़ान वटि त हिकिड़ो नैरेटिव आहे त हुनजी हुकूमत कीअं किराई वई, अमरीकी साज़िश सभु कुझु। अव्हां अगरि चूंडुनि में वेंदव त अव्हां अवाम वटि छा खणी वेंदव, अव्हां अवाम खे छा ॾिनो आहे? अवाम सभ खां पहिरीं त सभ खां वधीक ख़ुशि इन करे आहे जो तरीन इंसान खे, हिन घड़ी जोर खे हिन मुल्क मां प्राइम मिनिस्टर जी सीट तां हटायो आहे। अच्छा, पोइ जेके सिंध में तरक़ी थी आहे उहा अवां जे साम्हूं आहे। ऐं जेका पॉपुलैरिटी असांजी ॾिसणी आहे, तव्हांखे घणो करे अञा वेझो वञण जी ज़रूरत न आहे। तव्हां रुॻो जेको लास्ट फेज़ ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन जो उनखे ॾिसी वठो, उन लास्ट फेज़ में 95% सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं 5% सीट में हिननि न खयूं आहिनि, उहो बि ईंदड़ चुनावनि।
मां जिथां तालुक थो रखां, मुंहिंजी जेके यूनियन काउंसिल्स आहिनि उनमां 12 यूनियन काउंसिल अनअपोज आयूं आहिनि, मतिलबु नॉट जस्ट 1%, पूरा पैनल जा पैनल 12 यूनियन काउंसिल जा अनअपोज आया आहिनि। सो इन्हनि हालातनि में तव्हां प्रिडिक्ट कयो त इनखे फॉल वठी वियो। बाक़ी इहो तव्हांखे बि ख़बर आहे त डे बाय डे इमरान ख़ान जी पॉपुलरिटी हेठि थी वञे, मुंहिंजो ग्राफ हेठि थियो, माण्हू खे छॾनि पिया, माण्हुनि जी पॉलिसीज़ खे सम्झिया, मुंहिंजी नियत खे सम्झिया। इन साॻे फेस ते इंशाअल्लाह ताला तक़रीबन को साल खनि आहे इलेक्शन में, त इमरान ख़ान सां गॾु मां जेको मुंहिंजो दोस्त ने तव्हां सां ॻाल्हायो घणो करे हुते हूंदो, असांखे चई वेठो हूंदो महिरबानी करे असांखे हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एडजस्ट कयो। देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ इमरान ख़ान इन पाकिस्तान एवर अगेन। हे हिकिड़ी वॾी ग़लती हुई, हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट हो अहिड़ो जेको कुझु असांजे भाइरनि कयो, ऐं उहो एक्सपेरिमेंट जेको आहे बॉम्ब ब्लास्ट में थी वियो कन्वर्ट, ऐं हिन मुल्क जो जेतिरो नुक़सान आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। सो इहो वरी कॾहिं बि न थींदो आहे। दिस वॉज हिज फर्स्ट एंड लास्ट चांस। जेको कूड़ जेको ॻाल्हाईं, जेके मुल्क सां ज़्यादती कई, जेके करप्शन कई, जेके ख़राब फैसला कया पाकिस्तान जी मईशत जे ख़िलाफ़, जेको IMF सां डील करे पोयां भॼी वई, असांखे इहो फेस करणो पियो। त इहे सभु शयूं अवाम जे साम्हूं आहिनि। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू थींदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेके कोलिशन में नवाब साहब नथा सम्झो त सिंध जा माण्हू हाणे इहो सुवाल ज़रूरु कंदा त अवां 15 साल हुकूमत कंदव, 15 साल जी हुकूमती कारकर्दगी अवां ते सुवाल थींदा न, तव्हां 15 साल में सिंध जे माण्हुनि खे छा ॾिनो आहे? ॿोॾ ऐं मींहं जा सटायल माण्हू अॼु बि आसमान हेठि आहिनि, हुननि जी वाहर न करे सघिया अवां सही नमूने सां, पोइ माण्हू अवां खे वोट इन्हनि हालतुनि में बावजूद बि माण्हू अवां खे वोट ॾींदा ऐं अवां क्लीन स्वीप थींदव? मां सम्झां थो त बिल्कुलु बोर्ड जेका ठही आहे उहो कुदरती आपत्ति को हथनि सां कंहिं बि बिल्कुलु बोर्ड में पीपल्स पार्टी जा MNAs, MPs, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़फ़र छा आवाम सां गॾु जेको न बीठा, छा हिकु दौरे जो 4-4 5 दौरा न कया चीफ मिनिस्टर हिकिड़े दौरे जा, छा 3 चक्कर उमरकोट न आयो, छा 6 चक्कर न ई शिकारपुर जा, छा ठठे में जेको आहे हर 5 छेड़ी पहुची न पहुचंदो, इहो हूंदो आहे। ऐं किथे हो इमरान ख़ान, किथे वियो इमरान ख़ान जो जेके पैसा मिलिया पंहिंजो फंड जा, उहो त पंहिंजे जेको आहे शौकत खानम अस्पताल जे बजाए जेको आहे सो पंहिंजे जलसन जलूसन में हलाए छॾी। जेको 1.5 अरब हिन खे मिलियो हो शौकत नोबल अस्पताल लाइ, हुनमां 700 मिलियन हिन ख़र्च करे छॾिया पंहिंजे जलसन जलूसन ते, सियासी एक्टिविटी ते। अहिड़े क़िस्म जे माण्हू खे आवाम सुञाणे वई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम सां गॾु हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह अवाम सां गॾु थी रहंदी। अच्छा लालवानी साहब, हाणे ॿोॾ मुतासिर अॼु बि आसमान हेठि, नवाब साहब चवे थो पियो त असां हुनजी वाहर कई आहे, न सिर्फ़ु वाहर कई आहे बल्कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत वार कई आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि दौरा कया आहिनि, अव्हांजो लीडर गाइबु हुयो ऐं अव्हांखे वरी जेके फंड मिलिया उहे अव्हां शौकत खानम में ऐं सियासी जलसनि ते इस्तेमालु कया, त माण्हू अव्हां खां ज़रूरु पुछंदा त एॾो माण्हुनि सां एॾो वर्ताव छो? अच्छा, सभ खां पहिरीं तव्हांजो सुवाल हुयो त PGM जेको आहे माण्हुनि खे छा ॾिनो, जवाबु त तमामु सवलो हुयो पर उहो न आयो। ॾिसो, PGM जे अचण खां पोइ 5000 रुपया किलो वारो अटो 115 रुपया थी वियो। बिजली जी लोड शेडिंग जेको आहे 12 कलाक थी वई। गैस तव्हां कराची में रहो था, तव्हांखे ख़बर हूंदी केतिरा कलाक अचे थी पई। हींअर जेका फॉरेन ऑफिस आहे, बिलावल भुट्टो साहिबु जंहिंजो वज़ीर पंहिंजो ख़ारजा आहे, हू पंहिंजनि सिफ़ारत खाननि खे पैसा ॾेई कोन था सघनि, सूबनि खे पैसा मिलनि कोन था, इन्फ्लेशन तमामु घणी थी वई आहे। पेट्रोल जो पर बैरल जेको रेट आहे उहो $75 थी वियो आहे, 115 मां असांजी हुकूमत हुई तॾहिं 115 हो, हाणे किरी इहो थी वियो आहे। पर उनजे बावजूदि पेट्रोल जो प्राइस 100 रुपया वधी वई आहे। त ही बेसिकली हिननि ही जेको खणी आया हुआ PTM हुकूमत, जेको मोटो हुयो उहो हुयो उनजो केस माफ़ कराइण, जेको अॼु सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त जंहिंजो फ़ाइदो सिर्फ़ु हिननि कानूनदाननि खे ई थियो आहे इन सॼे मामले जो। बोर्ड जी ॻाल्हि कनि था, तैमूर साहब जो तालुक बि ख़ासि डिवीजन सां आहे। हिते इहो हशर आहे त हिकिड़े मुख़्तियार कार बोर्ड जी पूरी ट्रक विकिणे छॾी आहे, उहो 4-5 लख रुपया वठी उते उन मुख़्तियार कार ते केस दाख़िल थियो आहे। तव्हां कोयटा में ॾिसो त अक़वाम मुतहिदा जेको हिननि खे मोकिले थी पई पंहिंजो खेमा, उहे सिंध जे बलूचिस्तान जे मिसकिन माण्हुनि लाइ, हुनजे बचनि लाइ हुजणु घुरिजनि आहे। उते हू जलसनि में जेके हेठि विछायो कालीननि वांगुरु ऐं उन ते आयाशियूं पिया था कनि। कल्ह ख़बर हुई तव्हां जेको अॼु अख़बार में छपी आहे त पंहिंजो हिकिड़ो ॿोॾ मुस्तैल जेको ॿारड़ो हुयो, उन खे माण्हू जेके अगवा करे विया आहिनि, धाड़ेल अगवा करे विया आहिनि कदकोट ॾे।
त बोर्ड सताइलनि जी का 80% माण्हू अञा पाणी न आहे निकितो, को बि हिननि जो MPA MNA सिंध में ॿुॾो न आहे, सिंध जी अवाम सॼी ॿुॾी वई आहे। 15 साल हिननि हुकूमत कई आहे लाॻीतो। ही हिकिड़ी यूनियन काउंसिल ॿुधाइनि जिते हिननि को माण्हुनि खे पीअण जो पाणी ॾिनो हुजे, जेको हिननि जी मॉडल यूनियन काउंसिल हुजे। शहरनि खे त छॾे ॾियो, उहो कंहिं बि शहर जी ॻाल्हि करियो त हिननि सिर्फ़ु तबाही आंदी आहे ऐं अवाम बिल्कुलु पुछाड़ो कंदो। ऐं ही बिल्कुलु ॿुधाइनि, अवाम खे ॿुधाइनि त इमरान ख़ान घड़ी खणी वियो, इन करे असीं बिल्कुलु ख़िदमत कोन करे सघियासीं ऐं असीं कोन कंदासीं। हिननि जी सुबुह खां शाम जेका बि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुजे थी, उन में सिर्फ़ु इमरान ख़ान जी घड़ी जो फिक्र आहे जेको हुननि कानूनी तौर ते हासिल कई। सर अवां जो लीडर लाल साईं अवां ॾाढो तफ़सीली ॿुधायो त पीपल्स पार्टी हुन जा वज़ीर बोर्ड मुतासिरनि सां छा पिया कनि। अवां जो लीडर अवां नथा सम्झो त अवां जे लीडर ते बि फ़र्ज़ु हो त उहो बोर्ड जी सूरत हाल में सिंध जे माण्हुनि जी वहार करे आयो, अवां बि नज़र न आयो। अच्छा ॿुधो हिकिड़ी ॻाल्हि, सभ खां पहिरीं त अरिड़हीं तरह हिते हुकूमत न असांजी फेडरल हुकूमत आहे सिंध में, न असांजी प्रोविंशियल हुकूमत आहे। इमरान ख़ान हिकिड़ी टेलीथॉन जे ज़रिए पैसा गॾु कया ऐं उहे पैसा पंजाब हुकूमत जे थ्रू गॾु कया आहिनि। उहे पैसा मौजूदु आहिनि ऐं पंजाब हुकूमत वज़ीर आला जो बयानु जेको आहे रिकॉर्ड ते मौजूदु आहे त सिंध में अञा ही सर्वे असांजे वरी वज़ीर आला खे बि छॾे ॾियो, जेके बैनुल अक़वामी इदारा आहिनि, IMF आहे, हू बि हिननि खां घुरे थो पियो त असल डैमेज केतिरो आहे ऐं सर्वे छा आहे। ॿियनि जो हलियो वियो आहे, सिंध जो अञा ताईं उहो सर्वे मुकमल न थी सघियो आहे। हिन जो सर्वे अञा हलंदड़ आहे, हू हलंदो त ही पैसा हाउसिंग में इन्वेस्ट थींदा ऐं उहे इमरान ख़ान सिंध बि आयो ऐं हुन ते घटि में घटि इहो चोरी जो इल्ज़ाम न लॻंदो त आख़िर में बोर्ड सताइलनि जो माल बि खाई आहे। वॾी महिरबानी लाल माली साहब, नवाब तैमूर टारपुर साहब, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, ऐं टिनि मौज़ूअ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन मां PTI पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो। इमरान ख़ान अॼु चयो आहे त 20 डिसंबर ते वाज़े थी वेंदो त पंजाब ऐं KPK जूं असेंबलियूं जेके आहिनि उहे टोड़ियूं वेंदियूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त वाक़ई इमरान ख़ान इहे असेंबलियूं टोड़े थो पियो या इन ते U-टर्न वठे थो पियो, इहो त वक़्ती फ़ैसिलो कंदो। हिते प्रोग्राम में वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।